Hello. Hi Rohit. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग. मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, Rohit, हेलो. you're audible. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आई एम रोहित सर हियर. हेलो. हाँ, हाँ मेरी सर, आ रही आवाज है आ आवाज रही आ रही है? है Oh, आ thanks, रही है thanks. आवाज आ रही है Thanks. Without wasting much time, first and foremost, we welcome everybody for giving a valuable time for getting awareness or getting some knowledge, which is going to be delivered with our experts, Mr. Abhijit sir. He has a rich industrial experience in Etaps, so he'll be sharing a demo kind of introduction sessions. Thereafter, you can have discuss whatever technical queries, what is the scope, opportunity in using Etaps. He'll be able to share your thoughts, his experience, and his expertise to you. So we welcome everybody for participating in an event for design of electrical with Etab software. So, sir, Abhijit sir, you can carry the presentation or you can show the your screen, Yeah, and you can move it. Thereafter, I'll join with you later after completion by Abhijit sir. Thank you, Abhijit sir. Welcome, Abhijit sir. yeah. Thanks, Rohit.
And good evening to all. So basically myself Abhijit, and I have almost 11 years experience in the electrical power system analysis domain. And my experience is varying from the industrial simulation to the grid scale solar projects and wind projects and utility planning studies, basically 5-year planning, 10-year planning, future aspect of or financial planning of electrical industry, the transmission and distribution industry basically, and some type of IoT studies and utility of future kind of consulting to the global utilities basically. So that kind of analysis, that kind of experience I am having. So today we will basically understand why this electrical power system analysis is a critical thing, why it is required, or how it is helpful to basically for each of the player, starting from utility, though it is a small industry, or even if it is a large scale or gigawatt scale solar projects. So from starting from let's say 1 kilowatt or 10 kilowatt industry to the 1 gigawatt, 10 gigawatt, or large scale projects, the power system analysis is very much required. So basically, Etap or similar kind of a softwares are basically used for power system analysis. And if you see your curriculum also, this I think only this is the subject where you basically having some analysis in its name itself, that power system analysis. So we are doing some kind of analysis, not only design, but some kind of analysis on it by deciding or after designing all the equipment, how it will behave or how it will work basically when the power system see any kind of a disturbance or any kind of a event is occurred on a power system. So that all kind of a studies basically cover or come under the umbrella power system analysis. And the softwares like Etap, PSCAT, PSSC, or the Dixon and Power Factory, there are multiple softwares, but the Etap is basically widely used in the industry for power system analysis, because Etap is having very good reach and very good reach across the customer and client. And Etap is very useful for small scale projects and Etap is having multiple modules basically, starting from the load flow, short circuit, then the relay coordination, arc flash analysis, transient analysis, motor starting studies. So that all kind of things Etap can able to handle. So that's why Etap is very much useful across the industry. So that's why we basically mainly target on Etap. And so after this, I'll share my screen so that we can have a look what exactly Etap looks like and what are its screen basically, so that we can have a good idea. So I'll share my screen. So if you see uh, this is basically the Etab software screen, where you can able to see the first part, basically what are the network elements we required in electrical power system or while modeling in Etab. So yeah, you can able to see my screen. Yeah. Yes, sir. Yeah. So ETAP is basically having this kind of analysis we can do. So it has lot of toolbars and lot of the system related the views basically and the toolbars. So this is the basically ETAP's main screen. So this basically the project window where basically we can model the electrical equipment and the electrical network we can able to model here. Apart from this, this is basically the mode where we can select the type of studies like load flow, then short circuit. So all kind of studies we can able to select from this. Then this is the edit toolbar where you can see basically where all the electrical element or required element are present, like AC element, DC element, and some protection related element, fuse, switch gear, and some relays are there. So this is basically the majorly this is basically you can see the working window we have in Etap.
An Etap is having basically the folder structure like what we have in our uh, in the normal laptop, that the folder structure, basically the first folder, whatever elements you are building, that comes under each of the folder. Basically what kind of study you can able to perform, this basically shows this one. So these are basically the mode of toolbar. So once you select each of any one toolbar, let's say first we concentrate first the P and Q is written. So that is basically, if you see, it is a load flow related toolbar. So if it is a load flow related toolbar, then these are the elements we have. Like once we have in detailed kind of a load flow analysis, the load flow session, that time we can able to see what exactly this PQ and this again this second one meter. Then these are basically the display, then these are some alert values what we are getting, and this basically the report structure. So this basically the toolbars or the small elements that we have, we can able to access through Etap. Then so like if you see, this is the basically the load flow toolbar format, if you can say. So first is load flow related. If you click on this P and KV, then it will run a load flow calculation for you whatever network you have built. And second is basically, this one is basically the toolbar option, the display option. So what are what you want to see on a single line diagram, like active power, reactive power, power factor, or in terms of ampere rating. So these all you can select by using display. Then this is basically alert. So if you're setting some alert that if any element cross 80%, then it will, if it has to show the some alert kind of a thing. So that kind of option is also available. If you want to access the generated report, then you can go here. Then if sometimes it will stuck in calculation, if it is if it is stuck in some loop, so that time we need to stop the calculation. So that basically can be done through stop calculation. Then Etap is also able to communicate with the SCADA system. So that's why we can able to also get the data from the SCADA, and we can build a single line diagram, then run multiple scenarios on it and make a system analysis of the system. So that also can be possible. So this basically the load flow toolbar. So similarly, if you see in the first window itself, here if you see, so just now we saw this mode wala toolbar, in which first element is what we saw is load flow. Now we are shifting to this edit toolbar. Edit toolbar options, what are the options or what are the network elements we can have to build a network. So that basically we can able to see. So if you see all the network element which are required to build a single line diagram, or which are required to build the electrical network, that are all options are available. So like it is a bus or two winding transformer, three winding transformer, if it is a cable, reactor, or a transmission line. So all kind of not only this, if some HVDC element also available, some fact device also available, and even some solar related things are also coming in the new ETAP, which is basically the solar model and the wind model also are available. Apart from this, these are basically some protection element like fuse, HV circuit breaker, some relays are also available, then overload heater. So these are options are also available, and these all are elements are AC element. And basically this right hand side, if you see, these are the DC elements. So basically ETAP is also able to perform DC load flow also, not only AC load flow, but DC load flow is also possible in ETAP. So for the DC load flow, whatever is required element like cable, then converter, battery. So some kind of a battery design, some kind of a DC load flow analysis, that also can be performed in a ETAP, basically by using this DC module and DC elements, and by using AC element. Then basically these are some the instrumentation required, like to create to basically to check the protection analysis. So basically if you want to perform, or if you want to select the relay, or after selecting relay, if you want to set the relay point, when relay needs to be triggered, at what time, or what protection curve it needs to be followed. So for that basically we required all this kind of element. Let's say current transformer, potential transformer, ammeter, voltmeter, multimeter, or different types of relay, that is voltage relay, frequency relay, or overcurrent relay. So these all are options are available in Etap. So basically Etap is software that it having multiple modules, multiple modes, and multiple domain to work upon it. So we can perform a load flow, then short circuit, then relay coordination, arc flash, then transient kind of a study, harmonic kind of analysis. So all kind of analysis you can able to perform. So here if you see in that mode option,
The first one is basically, first if you see this pencil option is basically to use or this pencil option is available to edit the element. So once you build a network and if you want to change something, let's say if you want to change that load value from 1 megawatt to let's say 1.5 megawatt, so you have to go to the edit and then you can able to edit their, maybe you can edit their rating, you can edit their name or tag also you can able to edit. And this, starting from this PQ to the last element, this capacitor, optimal capacitor placement. So these are the studies basically which are required for AC analysis, the AC network analysis. And these last three studies, if you see, these basically are for the DC analysis. So Etap, you can able to perform AC and DC analysis in a single network itself. So basically, if you see in the PQ network, so these are the options that just now we saw. So by changing, if you go to the display option, then you can able to see what are our megawatt value, what are the kilowatt value. Then basically this is the utility. So this is the main grid and how much power it is supplying to the main grid. And so this all kind of analysis you can able to perform in Etap basically. So this is again a similar toolbar like a harmonic analysis. So for that, what kind of harmonic calculation we can able to perform, then what kind of a waveform. So this is basically just an overview of this is basically a transient stability analysis for Etap. Then this is the main or Etap is very useful for this protection kind of analysis. Etap is mainly used for this to create this TCC curve, the time current characteristic. So Etap's major use is basically apart not only the load flow. Load flow is very rarely used, but mostly Etap is used for this to create this kind of a curve basically. So what we are seeing on a screen currently. So this is basically a time current characteristic, how the relays are operating, where the fault current is lying, and what are this protection curve basically. So that kind of analysis can Etap can able to perform. Then there's some DC load flow related option, optimal load flow. So this optimal load flow is basically it has having some constraint that if you want to minimize the real power loss, then what needs to be done, then how the network will operate, or if you want to minimize the fuel cost. So that kind of economic analysis also can be performed by using the optimal load flow in Etap. And this is basically the reliability assessment, which is very much critical or very much useful for the utility industries, where they have some SAIFI indices which they need to be maintained or which they need to be minimized their failure rate. So for that kind of analysis, this reliability assessment is very much useful. Then this is basically again the next study is basically optimal capacitor placement. So for a network where we can able to put the capacitor so that basically so that it will serve the purpose for almost maximum size of a network by putting a single capacitor. Otherwise we have to put multiple capacitors at multiple places. So the capacitor placement is also critical. So that kind of analysis also we can able to perform in Etap. And similarly, like AC, these are basically the DC tools or DC tools available. Like this is the load flow, then the short circuit, and the next one is basically battery sizing. So DC is very much critical to size the battery. So this kind of analysis is also able to perform. Now we'll see how the new project in Etap we can able to create. So once you open an Etap, then you will see this the blank window where you can have this first option to create a new. Then if it is any old project that you can open from this option, then these are the save options. So if you click on the first window, then it will ask if you want to create a new, or you can copy paste, or you can use the same network. Like if you model as a network, already model a network, and same network you want to use for some another kind of a study, or if you want to make some small changes in it, then you can go for you can already have that network, you can directly copy it to the new network, and if you click OK, so it will create a new network. So basically if you add any element, so how that nomenclature is having, so that bus ID is bus 1, how it will bus come. So what is that element is, so that element is a bus, and what is its unique number is 1, so that it is bus 1. So that's why this bus 1 is coming.
Similarly for the transformer T1, T stand for transformer, 1 stand for the one transformer, first transformer. So you can change this name also. So if you know the name of that bus or location of that bus, you can definitely double click on it and you can edit that name. And similarly for the transformer, so if you know the naming of this element, then you can have that, you can definitely put that naming. But if you don't know the naming, or if you don't not aware how that nomenclature is given, so that or by default if they are not given any nomenclature, so by that time you can use whatever Etap's by default nomenclature. So basically how that bus is going to connect to the element. So similarly element to element connect and this. So if you see here, once you from that edit option, you can bring that bus directly here. From the transformer also you can build. From the transformer secondary side, you can directly drag the, you can just click here and you just need to go and just click on a bus, so that this line will automatically draw. Similarly, if you can, so if you want to connect the transformer and the cable, just need to select or click on the transformer secondary side or the transformer's one element, and then you just need to move the cursor and click on the cable, so that this connection will also get automatically connected. And if you don't want this kind of a connection, then you can convert this one to the node basically. So once you create this one, it automatically create one node, which is basically the, again it will automatically create one bus in between here itself. And the remote connection, so if it is if the single line diagram is very big, and if you want to have some multiple connections, and how that can remote connection can be shown. So that remote connection is also you can shown like this T1. So that T1 is connected to this CL. CL is the remote connection name. It is connected to the T8. From here it is connected to the bus 7. So similarly that remote connection option is also available. Then you can insert a circuit breaker or the protector device. So before creating this protection kind of analysis, we first will run a load flow, then second we'll go for the short circuit, then we'll go for the protection kind of analysis. So for that, what we'll do, first we'll create a single line diagram. Then if you want to place any element in between, you just need to click on it and you just need to drag and drop here. It will automatically inserted it in between this transformer and the bus. So basically, like I told you, this Etap is having the similar structure like the Windows is having. So like what we have recycle bin, so Etap is having a dumpster. So whatever elements you are deleting from it, it automatically goes to the dumpster. So whatever elements are present in dumpster, that naming Etap will not take. It will say the duplication error. So that whenever you move anything into the dumpster, so you just go there and delete clear a dumpster, so that you can use that name again. So basically to create a simple project, this is basically the 4 elements is required. The power grid is required, then one transformer and one load, and these are the 2 buses which is required. So this is the simplest grid we can model, and we can run a load flow on it. So for that, we assume that grid short circuit ratio, we need to put an X by R ratio. These are some random values. So while building Etap network, or while building any element or any network, first we should get all the element details that are required to model the network. So these are basically the minimum data we required for load flow kind of analysis. Let's say for power grid short circuit an X by R ratio, then what is that bus 1 rating, bus 2 rating, then what is the transformer rating, transformer MVA, then what is the percentage impedance of the transformer, the X by R of the transformer, then what is the load connected, what is that lump load, and in that lump load what is the power factor, what is the motor load, and so these are kind of details we required. So if we have a details, we just need to from that edit element, we just need to bring this element here. If you double click, then you just need to put this value. So like once you created all these elements, you just connect all the elements and run a load flow, then you can able to see this kind of a load flow analysis. So that how much is the load connected, and
how much is the percentage at this percentage is basically representing how much voltage is present at this bus. So here it is 100%, here it is 99%. So this is the representation of the voltage basically per unit representation. So similarly here if you see some more element it is inserted, now some cable, again one transformer, some lump load are connected. So whatever network we are already built, we are just extending that element with some other values, then we can run a load flow. So this kind of analysis is possible in Etap. So this is basically the Etaps having structure. So if you see here the 3D. So basically here if you see, just give me a moment. Yeah, sorry. So if you want to show the similar generator in two different operating mode, in first operating mode, if it is a voltage control and if it is second in a swing bus, so that also can analysis is possible in Etap. And if it is the same load, if you want, and some different loading condition, so that also kind of loading condition is possible. We can just need to change some configuration so that we can able to use the same network element. So this is basically a 3D database where in a status element you can put a configuration like what is the circuit breaker on off, or what is the condition of the load, then motor status. The presentation is basically the symbol and how that network is behaving or how that network is modeled in the network. So that basically the presentation. And this properties are basically the very much important part, which is basically the nameplate rating and the loading and dimensions and the settings. So this is basically the critical thing that we can able to decide by doing a load flow analysis. So in a display, basically these are the things that come under like single line diagram or impedance diagram, this relay diagram, the physical diagram and study diagram. So these are the basically analysis, or these are the basically diagrams which are available under the display option. In a status, basically generator is off or generator is on condition. So these are basically the status or configuration. And third one is basically the multiple things like in a base case, the rating of transformer is 30 MVA. In next this one, it is a 40 MVA. So this multiple kind of analysis we can able to perform. So these are some user access in project editor and all these things. Circuit arrangement what we have in Etab is basically the radial element system is possible, loop system is possible, then primary selective system and secondary selective system is also possible. So this is basically the simple or expanded radial, you can see inverted tree, no duplication and least expensive, so simple in operation and easy to analyze. So these are basically some of the advantage of the radial system. And this is basically the loop system where you can see this basically get interconnected from this point. So this form parallel loop. So this is basically the parallel operation of the transformer. You can definitely do such kind of analysis. Then this is primary selective, like this only one transformer is in circuit and others are not. So this transformer is out of service. So you will get a feed from these things only. Then the next case, if you want to perform, if this transformer is out of service, then how the network is doing. So this single transformer is able to supply to all this load. So that kind of a thing is possible. So yeah. So anyone having anything to discuss? Basically, this meeting we have arranged so that you can have a discussion, whatever. Sir, can you tell like what is the opportunity of doing this Etab software to our students? Because many of the students are knowing AutoCAD, somebody has done E-Plan, and what is the benefit in terms of their career opportunity as a electrical design engineer? First thing, second thing,
and if they learn, means like what are the companies they can get an opportunity to work? Yeah. So basically, Rohit, if you see, Etap is the software which basically used in the multiple industries, and Etap is having very large kind of opportunity in terms of power system analysis. So I can definitely say from last 11 years my experience that no other software is basically using in the industry than Etap. Etap is basically very much useful across the industry. So if anyone is having interest in power system analysis, then Etap is the best tool to enter into the sector. So Etap is having very good kind of opportunity. या हेलो सर, मैं आम सरिता। मुझे ये पूछना था, वहाँ पे के रेटिंग और हमारा शॉर्ट सर्किट रेटिंग है, उसमें डायरेक्टली आता है क्या कैलकुलेट करते हैं तो? तो ETAP में क्या है ना कि अगर इफ यू एंटर सम वैल्यूज सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट कैलकुलेट सम वैल्यूज फॉर यू. So बट let's say, I'm entered in a 5 MVA transformer. Okay, that okay. time impedance and short circuit rating is mentioned in directly there. हाँ, तो बाकी सब सॉफ्टवेयर और ETAP में यही एक एडवांटेज है कि ETAP में सब बाय डिफॉल्ट वैल्यू बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड, some not exact value, some approximate value. Let's say if it is a 5 MVA transformer, then as per standard, let's consider its impedance lies between, let's say, 7 to 10%. So that 10% value is already there in ETAP. So if you don't have a value with you, so that you can use ETAP software to basically Etap software to basically some kind of preliminary analysis where we are not sure about the rating. So that time Etap is very useful. But that time I am required in a complete app. That time I am a designing that. बट मुझे तो उसका तो एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए ना सर, कि उसका के रेटिंग कितना आना चाहिए, वो बस कितने इसका होना चाहिए। बिकॉज माई लोड इज 33 kV, मेरा जो लोड बस लोड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रांसफॉर्मर, उसके अकॉर्डिंग मुझे वीसीबी सिलेक्ट करना पड़ता है। सो डायरेक्टली अगर मैं ए टैब में डालती हूँ कि मेरा 15 MVA या 5 MVA का मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर है, सो नाउ दैट उसका के रेटिंग, इम्पीडेंस रेटिंग आएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वीसीबी सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या? ETAP में कर सकते हैं आप, जो कुछ आपका इक्विपमेंट रेटिंग है वो आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकते हैं, VCB और इवन ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंस आल्सो. सो ऑल दिस डिटेल्स वी कैन डेफिनेटली सिलेक्ट इन ETAP और डिसाइड इन ETAP बेसिकली. ओके, और दूसरा एक मुझे पूछना था कि ट्रांसफॉर्मर रिले जो भी आता है, ओके, अभी अगर वीसीबी लेते तो उसमें न्यूमेरिकल रिले कौन सा यूज करना है, उसके प्रोटेक्शन कौन से यूज करना है, वो डायरेक्टली उसमें आ जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं. सो अभी क्या होता है ना इंडस्ट्री में कि आपको जो प्रोटेक्शन सेट करने हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं. मतलब एक आपका सिंगल लाइन डायग्राम की तरह एक प्रोटेक्शन एसएलडी बनता है. सो जो डिजाइनर है वो डिसाइड करेगा. लेट्स कंसिडर कि अगर कोई आपका एक छोटा सा प्लांट है वो आपको डिजाइन करके दे रहा है, तो ही ओनली टोल्ड यू कि दैट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर दिस आर सेटिंग, दिस आर रेटिंग, दिस आर रिले सेटिंग, रिले नीड्स टू बी सेट बेसिकली. बट यहाँ पे अगर कर लेते तो मैं पीएस ये सब मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है ना सर उसमें. सेटिंग तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. दैट्स व्हाट, सी आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर ले लो तो आपको रिले सेटिंग तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा. ऑटोमेटिकली कोई कैलकुलेट करके नहीं देगा. बट अभी ETAP में एक नया मॉड्यूल आया है जो ऑटोमेटिकली आपको मतलब इफ यू ओनली पुट द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग और इक्विपमेंट रेटिंग, नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मर, अगर आप सब इक्विपमेंट का करेक्ट रेटिंग डाल दोगे तो ETAP विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द दिस वन सेटिंग पॉइंट बेसिकली. ओके, और सेम एज द वीसीबी whatever equipment you are setting, और इवन आपने कुछ गलती से या कुछ मतलब अगर आपको कस्टमर ने बोला है कि आपको इसी रेटिंग का वीसीबी यूज करना है और आपने यूज कर दिया, और ETAP के ऑटो स्टार का मॉडल आपने यूज कर दिया, और अगर उसमें वो ओवरलोड हो रहा है या ओवर साइज हो रहा है या अंडर साइज हो रहा है, वो भी आपको ETAP बता देगा. मतलब मैक्सिमम फॉल्ट करंट आपका समझो जा रहा है कुछ एक 2 किलो एम्पियर के आसपास, और आपने अगर इक्विपमेंट का रेटिंग जो लिया है उसका 10 किलो एम्पियर रेटिंग है, तो विच इज ओवर साइज. सो उस केस में ETAP आपको ये भी बता देगा कि आपने जो सिलेक्ट किया वो ओवर साइज है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, और उसके लोएस्ट पॉसिबल मतलब उसके नीचे कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, वो बता देगा. ये तो हो गया सर लोड फ्लो का.
और इसका अगर हमें केबल केबल राउटिंग करना है तो हम ईटैब में कर सकते क्या? केबल राउटिंग कर सकते हैं, ईटैप में एक अलग से मॉड्यूल है उसके लिए। केबल केबल साइजिंग भी कर सकते हैं और केबल राउटिंग भी कर सकते हैं इसमें ईटैप में। ओके, सो उसके लिए फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर मीन्स कि एक कंबाइन वाला ईटैब आता है, क्योंकि मेरी इसमें तो वो पूछना था कि और ईटैप में क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। मतलब अगर कोई आप सॉफ्टवेयर भी परचेस करने जाओगे तो उसमें आप अगर ईटैप पूछोगे कि मुझे ईटैप चाहिए, तो ईटैप सबसे पहले आपको ये पूछेगा आपको उसको कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ओके ईटैप में सभी मॉड्यूल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सभी मॉड्यूल अगर हम एक साथ लेना चाहेंगे उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास जाती है। ओके तो अगर आपको उसमें बस लोड बेसिक मॉड्यूल चाहिए, जैसे लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट या रिले हाँ कोऑर्डिनेशन, तो उसका कॉस्ट अलग है। और उसमें अगर कुछ और जैसे आपने अभी केबल का बोला वैसा चाहिए, या कुछ आर्क फ्लैश का चाहिए, या कुछ हार्मोनिक्स का चाहिए, तो उस केस में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ओके ओके सर। तो आप अगर हम करते हैं तो केबल्स वगैरह वो अलग ही आ जाएगा ना उसका सॉफ्टवेयर? नहीं, ईटैप में ही एक मॉड्यूल रहेगा, सॉफ्टवेयर अलग से नहीं आएगा, मॉड्यूल वही रहेगा, उसमें बस मॉडल वही। मॉड्यूल अलग रहेगा। ओके, इज द कंप्लीट ऑन पावर सिस्टम प्रोजेक्ट, पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर। पावर सिस्टम एनालिसिस, करेक्ट, पावर सिस्टम का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है ये। ओके सर। और इसका क्या है ना, ईटैप इज यूजिंग, मतलब अगर आप कोई छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखोगे, जैसे सॉरी एक कोई ग्लास प्लांट है या एल्यूमिनियम फैक्ट्री है या कुछ जैसे ईटैप कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें बेसिकली आपका ग्लास प्लांट हो गए या एल्यूमिनियम फैक्ट्री हो गया, या कोई ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री जिसमें जहाँ पे आपको इक्विपमेंट रेटिंग डिसाइड करना है इलेक्ट्रिकली, तो उसमें ये टैप यूज होता है। उससे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, कोई बड़े कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है जिसका 10 मेगावाट 20 मेगावाट, या जैसे शुगर फैक्ट्रीज होते हैं उस ओके केस उस स्केल के प्रोडक्ट है, उसमें भी टैप यूज हो जाएगा। उसके भी थोड़ा सा अगर थोड़ा ऊपर चले जाओगे, जैसे आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जिसमें आपका एफपीएस होता है, जैसे फ्लोटिंग प्रोडक्शन, ऑफलोडिंग और स्टोरेज। मतलब या समुद्र में एक जगह पे आप ऑयल निकालोगे और उसको लेके आओगे, तो बीच वाला जो जहाज होता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, या ऑनशोर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ऑफशोर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो उस केस में भी टैप यूज होता है। उसके बाद ओके अगर आप कोई यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आप लेट्स कंसिडर कि एक महाराष्ट्र ग्रिड मॉडल करना है या कर्नाटक ग्रिड ग्रिड मॉडल करना है, और उसका एनालिसिस करना है कि वो नेटवर्क अभी कैसा बिहेव कर रहा है, अभी कहाँ कहाँ पे नेटवर्क ओवरलोड हो रहा है, और उसके ऑगमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। समझो कोई ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो रहा है, तो उसका लोड हम कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या कोई नया पैरेलल ट्रांसफॉर्मर डाल सकते हैं, या कोई पैरेलल केबल वहां से डाल के वो लोड हम डाइवर्ट कर सकते हैं। दिस ऑल काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन परफॉर्म इन ईटैप। उसके बाद अगर आप जैसे सोलर इंडस्ट्री में जाओगे या रिन्यूएबल इंडस्ट्री में जाओगे, तो उस केस में भी आप ई टैप का यूज करके लोड फ्लो एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट या ग्रिड कोड कंप्लायंस स्टडीज जिसको बोलते हैं, वो सब आप ई टैप का यूज करके कर सकते हैं। और उसके लिए मार्केट अभी बहुत करने के बाद ही हम मतलब बहुत सारे रिन्यूएबल प्लेयर्स जो है वो ई टैप को यूज करते हैं बेसिकली फॉर देयर एनालिसिस। आफ्टर दैट वो ग्रिड का जो मिल जाने के बाद ही हम हमारा जो लोड फ्लो है वो कर सकते हैं इसमें फिर ग्रिड का डिटेल्स सोलर में भी। मिलने के बाद, बट ग्रिड का डिटेल्स आपको क्या चाहिए, बस अगर आप लोड फ्लो कर रहे हैं तो आपको बस ग्रिड का एमवीए चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट एमवीए चाहिए। मतलब कौन सा स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट अलग है इनपुट डेटा का। मतलब अगर अगर आप लोड फ्लो ही करना चाह रहे हो तो आपको ग्रिड का एक्सपायर रेशियो लेके कुछ फायदा नहीं है। तो बेस्ड ऑन द स्टडी विच यू आर परफॉर्मिंग, द इनपुट डेटा रिक्वायरमेंट इज चेंजिंग। Okay. Because I'm also working in EPC Okay. project company, तो that's the reason कि ETAP का जो है मुझे थोड़ा क्वेरीज था कि जो है वो पूछना था Okay. करके। Yeah. एनीबडी और किसी का क्वेरीज है तो सर से पूछ सकते हो आप, मैंने फील फ्री टू आस्क हिम
because he has known the industries. Sir, one more thing, आप कैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेंटेनेंस में है या प्रोडक्शन में है, दे आर शिफ्टिंग टू डिजाइन, तो उनके लिए कोर्स कैसा यूजफुल रहेगा? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? कितने घंटे लगते हैं अगर हम लोग एक प्लान कर रहे हैं? Because Sarita has done certain course previously with us, so she was very much interested to join Etap's training course. So उन्होंने बोला भी कि she is interested. तो ऐसा कुछ अगर some more students 1 2 3 कुछ भी आएंगे तो we can start a batch. तो sir, previously what was the module? हाँ, कितना durations लगते थे hours wise? 1 month wise means like every day 1 hour, तो कितने देर लगेंगे ट्रेनिंग को? And commercial I can discuss to them personally. Sure, not an issue. So basically अगर आप Etap learn करना चाहोगे तो I would say almost 40 hours, 40 to 50 hours is enough, and some practice session from your side, some assignment if I am giving, so that if you can able to perform from your end, that is enough. So see, basically learning of Etap is basically learning a power system analysis. Etap is the only software where you are just modeling some things. सो लोड फ्लो का स्टेप मतलब बेसिक अगर कुछ आपको आइडिया है नहीं होगा तो भी हम वो मतलब जैसे जैसे हम लोड फ्लो स्टार्ट करेंगे तो आई विल नॉट टीच ओनली हाउ दैट बटन विल वर्क, आई विल टीच हाउ दैट लोड फ्लो विल वर्क, व्हाट आर द कैलकुलेशंस बिहाइंड इट. Based on that you can basically you see, basically learning of Etap is not like it's basically you just need to apply your brain to analyze the things basically. So वो वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो क्यों ज्यादा आ सकता है, क्या रीजन हो सकता है उसका? अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा दिख रहा है तो कहाँ पे इनपुट डेटा गलत हो सकता है, या क्या चीज मुझे चेंज करनी चाहिए, या क्या रिकमेंडेशन मुझे देना चाहिए? दैट ऑल थिंग्स आर कम अंडर द एनालिसिस. Otherwise, power system modeling is nothing. You can just drag and drop, put some element, just click on the load flow, that's it. But जो कुछ रिजल्ट आ रहा है उससे वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि मेरा शॉर्ट सर्किट रेशियो या शॉर्ट सर्किट करंट मेरा इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, ग्रिड का एक्सपायर मैंने जो लिया है वो सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन ग्रिड का वोल्टेज और ग्रिड का अगर शॉर्ट सर्किट एमवीए पता है. तो ये सब जो चीजें हैं वो आपका पावर सिस्टम एनालिसिस में आएगी. पावर सिस्टम मॉडलिंग और ईटैप सॉफ्टवेयर ये सब आप इजीली लर्न कर सकते हो. बट आपको मतलब ईटैप भी अगर लर्न करना है तो इट इज वेरी इजी टू लर्न ईटैप. ईटैप लर्न करना मतलब क्या है, आप कोई भी इसका ईटैप का डेमो डाउनलोड कर लो, फिर उसमें जो जो बटन कहाँ पे है वो क्लिक करके देख लो उसका क्या क्या काम है, बस हो जाएगा. या अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे तो भी आप ईटैप लर्न कर पाओगे. बट ईटैप लर्न करने से आपको इंडस्ट्री में कुछ मदद नहीं मिलेगी. आपको मदद कहाँ से मिलेगी कि आपको ईटैप जो रिजल्ट आपको दे रहा है उसको एनालिसिस कैसे करोगे, उस एनालिसिस के हिसाब से इंडस्ट्री में आपका पोजीशन ये हो जाएगा. अदरवाइज क्या है कि आप अगर सब सिर्फ मॉडलिंग ही करोगे तो आप एक मॉडलर ही बन जाओगे, बस आप मॉडल करोगे कोई और उसको ऊपर एनालिसिस करेगा और सब क्रेडिट उसको चला जाएगा. तो बेसिकली आपको एनालिसिस करना अंडरस्टैंड करना है, नॉट कि ईटैप का बटन क्या काम कर रहा है. जहाँ पे लोड फ्लो पे क्लिक करेंगे तो वो रेड वाला वैल्यू देगा, तो वो रेड वाला वैल्यू मुझे कुछ लेना देना नहीं. वो वैल्यू का मतलब उस वैल्यू के नंबर से भी मुझे कुछ मतलब नहीं है. वो वैल्यू वहां पे क्यों आया इसका मैं एनालिसिस जब कर पाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि मैं ईटैप सीख गया या मैं पावर सिस्टम एनालिसिस सीख गया. और एक बार ईटैप सीखोगे तो बाकी सब सॉफ्टवेयर वही है कि जहां से मतलब एक साइड में आपको एलिमेंट रहेंगे उसको ड्रैग करना है, डबल क्लिक करके उसमें इनपुट डालना है, फिर कोई और एक बटन क्लिक करना है, बस बटन का लोकेशन चेंज हो जाएगा. किसी और सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड में होगा, किसी और सॉफ्टवेयर में राइट साइड में होगा, कहाँ पे डाउन होगा कहाँ पे अप होगा, बस वही चेंज है. बाकी कुछ फर्क मतलब डिफरेंस है नहीं उसमें. बस आपको यही है कि जो कुछ वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके दे रहा है आपको, एनालिसिस मतलब वो कैलकुलेशन करके जो दे रहा है वो आपको एनालिसिस करने आना चाहिए बेसिकली. जैसे क्या होता है कि हम सब के पास हमारी कुंडली होती है, उस कुंडली में क्या है कि हमको पता है ये इधर है, इस कोने में ये है, इस कोने में इस कोने में है, बट हमें ये नहीं पता कि इसका एनालिसिस क्या है. जब हमें एनालिसिस करना सीखेंगे तभी हम बोलेंगे कि मुझे ये सब रीडिंग करना आ गया. तो वैसे ही टाइप का सॉफ्टवेयर का है, जो कुछ आपके रिजल्ट आपके सामने जो सॉफ्टवेयर थ्रो करेगा उसको एनालिसिस करना है कि इस पॉइंट पे ये कंडीशन पे क्या हो सकता है. अगर मेरा वोल्टेज 20% ड्रॉप हो गया तो मेरा कैपेसिटर पे क्या असर हो जाएगा, मेरा रिएक्टिव पावर का इश्यू क्या होगा, अगर रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, कम हो गया तो क्या हो सकता है. तो ये सब एनालिसिस करना आप जब सीख जाओगे, और 40 आवर्स में तो आराम से सीख जाते हो, उसमें कोई
ये नहीं। और मेजरली अगर आप देखोगे तो ईटैप में या कोई भी इंडस्ट्री में आपको एक तो लोड फ्लो स्टडी और आपका शॉर्ट सर्किट स्टडी और हार्मोनिक एनालिसिस, ये तीन ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। बाकी स्टडी जो है जैसे रिले कोऑर्डिनेशन वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, या रेट्रोफिट प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपका एबीबी का रिले वो निकाल के सीमेंस का लगाना है, या ऑलरेडी कुछ या कुछ नया प्रोटेक्शन एनेबल करना है। जैसे ट्रांसफार्मर मैंने बिठा दिया, पहले मेरे पास डिफरेंशियल नहीं था, मुझे अभी डिफरेंशियल एनेबल करना है, नेटवर्क कंडीशन चेंज हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है कि रेट्रोफिट प्रोजेक्ट से, इसमें क्या है कि ऑलरेडी सब सिस्टम है, आपको उस पर बस एनालिसिस करना है। तो वो सब एनालिसिस आप जब करना कब सीखोगे, जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे डिफरेंशियल में मुझे क्या क्या चाहिए। डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो मेरा बीच वाला जो रिले है, बीच वाली जो कॉइल है उसमें मुझे ग्रेटर देन 0 करंट जाएगा, तो मेरा वो डिफरेंशियल ट्रिप होना चाहिए। तो वो किस में ट्रिप होगा, फिर उसमें अनबैलेंस करंट कितना सिस्टम का है, फिर न्यूट्रल कंडीशन क्या है, न्यूट्रल कौन से पॉइंट पे अर्थ की है, वेदर इट इज अ रेजिस्टेंट ग्राउंडेड न्यूट्रल है या डायरेक्टली फ्लोटिंग है, वो सब के हिसाब से यू कैन एबल टू डिसाइड कि भाई इतना इतना सेट करना पड़ेगा, अगर इतना सेट नहीं किया तो ये रिले अननेसेसरी ट्रिप हो जाएगा, या अगर इतना सेट किया तो वो ट्रिप ही नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन एंड टेक अ डिसीजन। सो वो एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे केबल साइजिंग है या कोई कुछ ट्रांसफॉर्मर साइजिंग है, सो ये बेसिकली आपको एनालिसिस करना कि मतलब केबल वन टाइप वन का मैंने यूज किया और टाइप टू का भी यूज किया है सेम इक्विपमेंट पे, तो कहाँ पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे मेरा लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे कौन सा केबल चेंज करना पड़ेगा, ये सब जो डिटेल्स है। या इसके हिसाब से अगर आप कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, मतलब ई टाइप में क्या होता है कि आप दो टाइप के एनालिसिस करते हो। एक तो आपको सिस्टम मतलब प्री फीड स्टडी, मतलब सिस्टम डिजाइन होने से पहले, मतलब सिस्टम ऑन ग्राउंड आने से पहले आप एक स्टडी करते हो जिसमें आप इक्विपमेंट की रेटिंग डिसाइड करते हो। और उसके ई टाइप के बाद उसके बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सिस्टम स्टडी से बोलोगे कि मुझे ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस 7.8 चाहिए, बट जो मैन्युफैक्चरर है वो तो 7.8 का ट्रांसफार्मर नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, वो 8 का बनाएगा या 9 का बनाएगा। और उसको अगर और प्रिसाइज करना है तो इट विल कम अंडर द कॉस्ट। तो उसके लिए आपका क्लाइंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं मुझे 10% एमवीए का दे दो, 10% इम्पिडेंस वाला दे दो। तो फिर आपको एक और एनालिसिस करना पड़ेगा, सेम नेटवर्क रहेगा, ट्रांसफर का इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा, तो वो इम्पिडेंस 7.8 से 10 पे चला गया तो क्या नेटवर्क में चेंजेस हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे लॉसेस बढ़ जाएंगे, कहाँ कहाँ पे रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी, कहाँ कहाँ पे आपको कैपेसिटर बैंक लगानी पड़ेगी, कितनी लगानी पड़ेगी, कैपेसिटर बैंक में फिर ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होगी, 95% पावर फैक्टर पे क्या होगी, यूनिटी पे क्या होगी, 90% लीड पे क्या होगी। तो वो सब एनालिसिस आपको जब करेंगे तब मतलब आप परफेक्टली सीख जाएंगे सब चीजें। या रोहित। हाँ, एनीबडी, आप कोई डाउट्स है सर? ये मेंटेनेंस, लाइक पीपल हु आर फ्रॉम मेंटेनेंस प्रोडक्शन, कैन दे लर्न, लाइक या पास आउट स्टूडेंट्स है या उनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या अगर उनको डोमेन चेंज करना है, सो बेसिकली मेंटेनेंस पीपल का क्या होता है कि दे ऑल द टाइम ऑन अ फील्ड एंड दे आर फेड अप विद देयर जॉब, सो दे वांट सम ऑफिस काइंड ऑफ अ जॉब। सो ईटैप या पावर सिस्टम एनालिस्ट वाले जो जॉब है वो सब आपको मतलब ऑफिस वाले जॉब है, ऑफिस में बैठ के एनालिसिस करना है, आपको किधर जाना नहीं है। डेटा कलेक्शन के लिए जाओगे तो एक दो दिन जाओगे, बट ऐसा नहीं कि पूरा फील्ड में जाके सब लेके आओ, वैसा कुछ नहीं होगा आपको। तो जिनको डोमेन चेंज करना है, स्विच करना है कि पावर सिस्टम मतलब मेंटेनेंस से आपको एनालिसिस में आना है, तो उनके लिए ई टैप मतलब बेस्ट है। और अगर आपके पास एडेड एडवांटेज है ई टैप का, तो वो मतलब किसी और को बाहर से रिक्रूट करने से अच्छा है कि कंपनी को पता है कि ये बंदा अच्छे से मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस है, सो वो मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस इफ यू कैन यूज इन अ पावर सिस्टम एनालिसिस, सो दैट विल बी अगेन अ प्लस प्लस पॉइंट फॉर हिम, कंपनी के लिए भी। तो वो जो लोग हैं जिनको डोमेन चेंज करना है विद इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फ्रॉम सम मेंटेनेंस एक्टिविटी और इन सम अदर थिंग्स, जैसे कोई सेल्स परचेस में और वो फेडअप हो गया कि मुझे नहीं करना है अब ये चीजें, मुझे कोई आराम से बैठने वाला जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे कुछ बाहर इधर उधर घूमना नहीं है, बस पावर सिस्टम एनालिसिस करना है, वैसे वाला जॉब चाहिए, तो इस फील्ड में मतलब एटैप लर्न करके आप आ सकते हो ऐसे।
और उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, नॉट इन अ पुणे, इवन इन अ पुणे में भी बहुत सारी कंपनीज है जो ईटैप पे काम करती है, जैसे ब्लैक एंड विच है या अर्बटस है या फिर एसगर एनर्जी है, और छोटे मोटे बहुत सारे प्लेयर्स जो है जो ईटैप यूज करके एनालिसिस करते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे भी मतलब ईटैप यूजफुल है। सर मुझे एक पूछना था, पीवी सिस्टम प्लस ईटैप अगर रहती तो अच्छी कंपनी मिल सकती क्या? पीवीसिस्ट और ईटैप अगर आप सीखोगे तो मतलब आपके लिए तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर का जितना भी डोमेन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ब्लैक एंड विच में भी यूज होता है, अर्बटस में, एसगर में, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको पीवीसिस्ट प्लस ईटैप रहेगा तो एडेड एडवांटेज है। मतलब आप ओके। सोलर की डीसी साइड भी जानते हो, एसी साइड भी जानते हो। जैसे बॉम्बे में चले जाओगे तो स्टर्लिंग एंड विल्सन है या फिर स्टरलाइट पावर है, और बहुत सारी, मतलब अगर आप लोकेशन आपको कंस्ट्रेंट नहीं है ना तो मतलब हजारों कंपनियां हैं। ओके। Even in Pune also, I'll name around 50 companies where ETAP and PVCist is required. Yeah, air product Surge Energy also know that than ETAP and PV system. एयर प्रोडक्ट में भी चाहिए बहुत सारे, मतलब वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ETAP चाहिए। एसगर एनर्जी में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर Yes. आपका ब्लैक एंड व्हिच में तो बहुत ETAP का काम चलता है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी, जैसे टीसीएस है उसमें भी बहुत सारे ETAP के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। और फिर बहुत सारे कंपनी। TCS also पावर सिस्टम प्रोजेक्ट करते हैं सर, कौन? TCS। हाँ, बहुत सारे कंपनीज ले वो, जिस मतलब क्या है कि वो किसी कंपनी में, मतलब उनका जो क्लाइंट है वो अगर उनको बोलता है कि मुझे नेटवर्क एनालिसिस करना है तो टीसीएस वैसे प्रोजेक्ट भी उठाता है। टीसीई है वैसे बॉम्बे में जो इसमें काम करती है, बहुत सारी कंपनीज है वैसे। ओके। पिनाकल करके एक बॉम्बे में कंपनी है जो इसी में काम करती है। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जो हमारी कंपनी है ओके। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, और जो है ईपीसी प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो अभी मेरा जो चालू वाला प्रोजेक्ट है वो 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का हम कर रहे हैं। सो नाउ दैट हमारा इंस्टॉलिंग एंड कमिश्निंग और सप्लाइंग का सभी प्रोजेक्ट चालू है। तो नाउ दैट जो भी हमारे डिजाइन है वो हमारे कंसल्टेंट से आते हैं, तो उनका भी कुछ गलत होता है तो उनका वोल्टेज रेगुलेशन, इम्पीडेंस या ट्रांसफॉर्मर जो रहता है, के रेटिंग वगैरह रहता है, ये तो पढ़ना ही पड़ रहा है। एज वेल एज अगर हमको सॉफ्टवेयर करने को मिलता है तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप वेरीफाई कर सकते हो। कंसल्टेंट क्या करेगा, वो जो मार्केट में वो अवेलेबल उठा के देगा, वो कुछ उसका एनालिसिस करके देगा। और बहुत सारे कंसल्टेंट क्या होते हैं कि उनके पास भी मार्केट प्लेयर जाते हैं। जैसे समझो मैं एबीबी का ट्रांसफॉर्मर बेच रहा हूँ तो मैं किसी कंसल्टेंसी में जाऊंगा और उनके साथ मेरा मीटिंग होगा, मैं उनको बोलूंगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जब भी वो किसी को कुछ रेकमेंड करेंगे तो वो उनके पास जो उनके जो कॉन्टैक्ट है, जैसे ट्रांसफॉर्मर मैंने बोला कि मेरे पास 10 MVA का ट्रांसफॉर्मर है विद 5% इम्पीडेंस, तो वो आपको रेकमेंड करेंगे। बट आपके स्टडी के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपका नेटवर्क जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से आपको कितना इम्पीडेंस रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मर का, वो आप जब एनालिसिस करोगे तो वो 5% आएगा तो ओके है। पर अगर वो 7% आ रहा है तो आपको कुछ और ये करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा उसमें। तो सर और पीपल फ्रॉम लाइक कोई भी, मतलब एक स्टूडेंट पास आउट है या 1-2 साल का एक्सपीरियंस प्रोडक्शन मेंटेनेंस क्वालिटी, दे वांटेड टू शिफ्ट इनटू डिजाइन, एनीबॉडी कैन लर्न ना, दोस आर Yes, yes. फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। ETAP का क्या है कि इवन फ्रेशर आल्सो, if any fresher wants to learn ETAP, it is a good point to enter in electrical power system analysis or in electrical power system industry basically। क्योंकि क्या है कि पावर सिस्टम एनालिसिस के लोग ही इतने कम हैं और अपॉर्चुनिटी इतनी है, बट लोग नहीं होते, इसलिए बहुत ओवरलोड होता है इसमें। पर अगर कोई फ्रेशर्स लर्न करना चाहे तो पावर सिस्टम एनालिसिस इज अ गुड थिंग टू लर्न बेसिकली। मतलब आप नॉर्मल काम से ये नहीं हो जाओगे। मतलब अभी देखो कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस वाला बंदा होगा या कोई इंस्टॉलेशन वाला, जो कोई बंदे होंगे वो क्या करें, किसी और से जो आया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको रेफर करना है, उसके हिसाब से है कि नहीं चेक करना है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लैग रेज करोगे। बट आपको भी, आप जब बोलोगे ये इसके हिसाब से नहीं है तो सामने वाला बंदा पूछेगा कि आपको कैसे पता कि नहीं है, या अगर ये नहीं है तो इसके बदले क्या होना चाहिए।
ये क्या होना चाहिए का जवाब तभी दे पाओगे जब आप कुछ एनालिसिस खुद से करके बोलोगे नहीं भाई यहाँ पे 7% की जगह 10% चाहिए। तो फ्रेशर जो लोग हैं उनके लिए तो ईटैप अगर लर्न करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी देती है, बट उनके पास ईटैप का थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज उनका दिखना चाहिए इंटरव्यू में बेसिकली। फैंटास्टिक। तो मतलब फ्रेशर्स हो चाहे 1 ईयर 2 ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन, वो कोई भी सीख सकता है। दे वांटेड करेक्ट टू करेक्ट। डिजाइन। मेरा पहला जो जॉब था इन एबीबी, तो वहां पे मुझे ईटैप का ई भी नहीं पता था, तब मैंने ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर दिया था और सिस्टम मॉडल करने के लिए बोला था। तो वहां से आप लर्न कर सकते हो। और क्या है ना कि आप जैसे जैसे आप मॉडल करना सीखोगे, खुद एनालिसिस करना सीखोगे और वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से वैलिडेट करोगे, सर मैंने ये एनालिसिस किया है इस सिस्टम के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे बताइए मैंने सही किया है गलत किया है, अगर मैंने गलत किया है तो कहाँ पे गलत किया है, और अगर मैंने सही किया तो आप मुझसे पूछिए कि मैंने ये ऐसा क्यों, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये जब आप डेवलप करोगे तो बहुत मतलब अच्छा स्कोप है उसको। तो मींस लाइक ठीक है। और लाइक सर विल बी हेल्पिंग दोज हु आर रियली वांटेड टू गो फॉर अ मींस कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स 40 hours, तो आप मुझे बता सकते हो। एंड सर वन मोर थिंग, सॉफ्टवेयर कैसे ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाइक अभी अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड का क्रैक आता है, ओरिजिनल आता है, ट्रायल आता है, तो ये लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं मींस अगर दे टेक ट्रेनिंग्स? तो इस सबके पास अगर पर्सनल लैपटॉप है तो आई वुड रेकमेंड कि आप क्रैक पे ही चले जाइए, क्योंकि डेमो वर्जन में क्या होता है बहुत लिमिटेशन होता है, 50 नोड के ऊपर आप मॉडल नहीं कर पाओगे और फिर बहुत सारा उसमें ये होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पर्सनल लैपटॉप है तो ही, अगर ऑफिस का लैपटॉप है या कुछ और चीजें हैं करेक्ट तो करेक्ट, थोड़ा जैसे सा। ऑफिस कमर्शियल यूज नहीं करना चाहिए। हाँ प्रैक्टिस अगर इफ यू हैड यस इट्स इवेंचुअली वो उनका लैपटॉप, आपको जो करना है आप करो। ओरिजिनल लेना है, 20 लाख का लाइसेंस लेना है, लो एजुकेशनल डेमो यूज करना है, क्रैक। आई होप मतलब एक हिंट मैंने दे दिया कि आपको जो करना है, देयर इज अ सॉल्यूशंस वेयर दे कैन लर्न इट। और ईटैप 16 का अवेलेबल है। और ईटैप का बेसिकली क्या है ना कि आपको गल्फ में इतने जॉब मिल जाएंगे ना ईटैप के लिए, इतने जॉब मिल जाएंगे कि मतलब अगर आपको कोई वहां पे रेफरेंस है जिसको आप बोल सकते हो कि मेरे पास ईटैप का नॉलेज है और मैंने मतलब आई कैन मॉडल सिस्टम, आई कैन एनालाइज द सिस्टम, तो वहां पे बहुत सारे जॉब है। गल्फ में तो बहुत जॉब है ईटैप के लिए। अभी मुझे भी गल्फ का ही स्टूडेंट्स कलाम ने शेयर किया, ही हैज कंपनी हैज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और वर्क फ्रॉम होम देयर फॉर अदर अनदर सॉफ्टवेयर, सम अदर डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो ईटैप्स में भी वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर आ सकता है इंडिया में भी। करेक्ट। डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। गल्फ से मेरे को ओपनिंग्स आ रही, बिकॉज माय सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव ओनली शेयर्ड। तो हाँ मतलब मेरे वो पास भी मतलब टैप के इतने मतलब, एक तो क्या है ना ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंडस्ट्री इतनी छोटी है ना, तो आप किसी भी बंदे को किसी न किसी की तरह से पहचानते हो। आपके दोस्त का दोस्त होगा जो पावर सिस्टम एनालिसिस करता होगा, मतलब मेरा एक दोस्त पावर सिस्टम एनालिसिस करता है, उसका एक दोस्त पावर सिस्टम एनालिसिस, और उसका कोई रेफरेंस वहां पे काम करता होगा। तो वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे से मतलब आती रहती है। और गल्फ में तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे दीवा है या मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसीज, या कंसल्टेंसी तो बहुत सारी है। और जैसे गवर्नमेंट बॉडीज भी है, जैसे दुबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर बोर्ड जो है, तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मतलब ओपन रहती है हमेशा फॉर पावर सिस्टम एनालिसिस स्पेसिफिकली। तो आई होप एवरीथिंग वी हैव क्लियर्ड। अगर कुछ और सर से कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड तो लेट मी नो। एंड आप पूछ सकते हो मुझसे। तो मेरा नंबर है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन में। मेनी ऑफ द पीपल नोज माय नंबर, आई ऑलरेडी दे आर सम ऑफ आर माय प्रीवियस स्टूडेंट्स आल्सो। तो आप पूछ सकते हो, लाइक बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच। इवन दो लोग एक लोग भी रहे तो वी कैन थिंक टू स्टार्ट। तो you know and those who are serious wanted to learn this software, because anyway आपका resume strong होगा and actually knowledge is always going to get advantages। तो आपको करना है तो you can contact me, this is my WhatsApp number 8793166470। and कुछ queries रहा फिर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो।
ठीक है, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है? कमर्शियल लगा तो मुझसे आप बात कर सकते हो। टेक्निकल कोई क्वेश्चन है? सर इज देयर, else we'll end the meeting after just 2 minutes. So almost 8:58, so we'll end at 9 p.m. Anybody? कुछ क्वेश्चंस है? कोई भी क्वेरीज, बिकॉज आपको कोई इसके लिए फीस पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट की एक ऑनलाइन का एक अच्छा हो गया, पीपल आर इनरोलिंग फ्रॉम दुबई, गल्फ, Germany, and they are taking advantage of trainings by the skilled people, the people who has hand experience. जैसे अभी सर एक हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज की तरह आपको ट्रेनिंग मिलेगा, लाइक यू नो आप इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करते हो, आपका यू नो एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको फिर धीरे धीरे करके, बट वो एक आपको एक नटशल में कोर्स की तरह डिफाइन कर दिया गया है जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। मींस लाइक एक ब्रीफ एक कोर्स डिजाइन किया गया जो सर का एक्सपीरियंस है, तो ही विल बी शेयरिंग टू यू, आई मीन सर मुझे एक हिज बात एक्सपर्टीज पूछना टू था यू। कि ये ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन कोर्स होगा? नहीं, ये ऑनलाइन रहेगा, सभी ऑनलाइन, अभी ऑफलाइन का कोई स्कोप नहीं है। कोविड के बाद हमारे यहाँ ऑनलाइन जब चल रहे, स्क्रीन शेयरिंग कैसे सर और मैं स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसी तरह से आप डाउट स्क्रीन शेयर कर सकते हो। यू नो जैसे नीचे में आप देखोगे माइक, कैमरा की जरूरत नहीं है, बिकॉज माइक इंपॉर्टेंट है, एंड चैट बॉक्स एंड स्क्रीन शेयरिंग प्रेजेंट नाउ में आप क्लिक करोगे, अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वैसे विल वर्क टुगेदर। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग टू, और इसके लिए आपकी वजह से वैल्यू एडिशन आपको मिलता है कि 2-3 लोग का बैच भी फॉर्म्ड हो जाता है, एंड सर को भी आने जाने की जरूरत नहीं रहती है। और आपको ही पता है कोविड में बहुत अच्छा चल रहा है हमारी ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ रीजॉइनिंग फैसिलिटी वर गिविंग डाउट सेशंस। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गया तो फिर से कोई नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैच में आप फिर से डाउट के लिए आ सकते हैं। एंड इवेंचुअली आपको कोविड के समय से हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, एंड इट्स रियली वर्किंग फाइन फैंटास्टिकली विद वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि वो उनको टाइम के टाइम नहीं है, उनको ट्रैवलिंग टाइम की मुश्किलें है, दे आर वर्किंग समटाइम्स फ्रॉम होम। तो and especially for you, if I have to arrange a faculty to come at our physical center, you know how do it be costly affairs? आपको बताओ, फैकल्टी को बताओ, फिर आप आओगे नहीं आओगे, आज आप एब्सेंट, कल सर का कुछ काम आ गया। तो ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा है, चल रही है हमारे यहाँ, एंड इज द बेस्ट वे वेर यू कैन लर्न ऑल्सो। कोई डिफरेंस नहीं, इवन पीपल आर एंजॉइंग, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहे हैं आपको, एसएस मिल रहे हैं कि कोई डाउट्स आ गया फिर से आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके रिवाइज कर सकते हो। So, but Timing will keep in the evening only, see similar time like 8 to 9 p.m. or something we can decide, depends आप जो interested है, I'll confirm you। जो भी most probably 8 to 9 p.m. ही रखते हैं बेस्ट टाइम, या 8:40 देखते हैं, like evening में ही रखते हैं, because all there are working professional, और weekend रखेंगे, let's see। I need to understand who are enrolling, who are serious to take actions, तो we can decide, because मुझे बहुत बड़ा बैच नहीं बनाना, 2-3 का भी बन गया तो we can go start with the things okay. in the first batch, you can say। And sir has already taught several students, it's not कि आप पहले students हो, sir has expertise, and he has also taught, maybe he's into his industry, his company, or maybe in somewhere, you know, so he has good delivery experience also। और कुछ आपको queries है तो आप बात कर सकते हो, मेरा नंबर है, you have my all people No, sir, numbers। actually the power system analysis उसको करने के लिए पे थोड़ा स्टडी भी करना, then after that के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप सरिता सेपरेटली मेरे से आप कॉल करो, विल सॉर्ट आउट क्या आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, कौन से टाइम। तो एंड एनीबॉडी एल्स, अदर पीपल, तो आप मुझसे टच में रहो। माय नंबर इज ऑल, आई हैव शेयर्ड माय नंबर आल्सो अगेन। आप 8793166470, तो यू कैन बी इन टच विथ मी। आपको अभी करना है तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन जुलाई फर्स्ट वीक ओनली। सो अगर एनरोल करना चाहते हो तो फिर मैं फीस सब बता दूंगा, मेरे को पर्सनली पिन करो, विल एग्जीक्यूट योर ट्रेनिंग्स, ओके। So I hope it was a one. Thanks, especially I would thank to Abhijit sir for sharing a valuable information and time with us. Thank you. Good night, everybody. Thank you. Good night. We are ending the meeting, sir. Thanks, everybody. I'm ending the meeting. और कुछ क्वेरीज नहीं है ना, कोई भी टेक्निकल क्वेरीज तो आप मुझे फोन करो या व्हाट्सएप करो। Thank you, sir. Abhijit sir. Thank you. Thanks a lot. Have a good day. Have Good night. a good day.